friends, welcome to Nirmal Bang. I'm Piyush Jain, and today we are bringing to you another company which is going to get listed soon on the bourses. This company belongs to the real estate infrastructure sector. The company belongs to North India, has been making its mark over the last many years in the NCR Gurgaon region. Let me now introduce the management and the company both. Company is Signature Global India Limited, and joining us is Chairman Mr. Pradeep Aggarwal and the CEO Mr. Rajat Kathuria. Gentlemen, welcome to the show. Hello. Good morning. Thank you. Morning. Pradeep, let's first start from the perspective of understanding the company, how the journey has been, and help us understand what's the basic business model of the company. सो देखिए, सबसे पहले तो बड़ा बेसिक मॉडल हमारी कंपनी का है. आज आप देखिए कि जो हम हाउस बना रहे हैं वो एस्पिरेशनल हाउस है और वो कॉमन मैन से कोरिलेट कर रहे हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि लास्ट 10 ईयर में सिग्नेचर ग्लोबल ने जिस तरीके का वहाँ पर दिल्ली एनसीआर में स्पेशली इन गुरुग्राम में काम किया है, उसका मेन फोकस रहा है कि किस तरीके से अफोर्डेबल हाउसिंग जो एस्पिरेशनल होम है, गुड क्वालिटी होम और मिड इनकम हाउसिंग, उनको कैसे बेस्ट बनाकर राइट प्राइस पॉइंट पर डिलीवर किया जाए. आज इतने छोटे से स्पैन के अंदर ही आप ये देखिए कि जो दिल्ली एनसीआर के अंदर जो मार्केट शेयर है कंपनी का इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग और मिड इनकम हाउसिंग 19% मार्केट शेयर कंपनी का है. एंड इसका बहुत बेसिक रीजन रहा है कि कुछ नहीं बहुत ज्यादा किया है, बड़ा सिंपल सी टर्म की है कि लोगों का घर टाइम पर, क्वालिटी घर और राइट लोकेशन पर, राइट प्राइस पर डिलीवर कर दिया. तो आई थिंक से एक डेवलपर के लिए मुझे लगता है जो लास्ट एंड है वो यही है कि उस जो जिस होम बायर ने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है उसके हाथ में उसकी की विद इन टाइम डिलीवर कर दी जाए. और मुझे लगता है कि बहुत सारे डेवलपर हैं जो रीजन भी रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल इसी वजह से करते हैं कि राइट टाइम पर डिलीवरी नहीं हुई. और हम लोगों ने, क्योंकि हम फास्ट ग्रोइंग कंपनी हैं, हम लोगों ने इस मॉडल को बिल्कुल चेंज किया है. कहीं ना कहीं आप ये देखिए हमारी कंपनी की जो बेसिक थीम देखेंगे उसमें आपको फैक्ट्री मॉडल नजर आएगा. हमने बिल्कुल इसको एक फैक्ट्री मॉडल की तरह बनाया है. हमारे लिए लैंड, सीमेंट, स्टील सब रॉ मटेरियल की तरह है जिससे हम घर प्रोड्यूस करें. राइट. इसमें सर अफोर्डेबल हाउसिंग आपका फोकस एरिया हो गया. एवरेज टिकट साइज क्या होती है सर घर की? सो देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग का जो प्राइस है वो लगभग 30 लाख रुपए के नियर अबाउट होता है और जो मिड इनकम हाउसिंग है वो लगभग 50 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक वेरी करती है, डिपेंड ऑन लोकेशन, डिपेंड ऑन साइज. अच्छा. और रजत जी, इसमें रेवेन्यू प्रपोर्शन इसमें कितना होगा, लाइक फॉर बोथ अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, दोनों के बीच में कंपनी का रेवेन्यू शेयर क्या होगा? So, Piyush, we started the company focusing only on affordable housing projects. So, when we started in 2014, it was around affordable housing policy, which was introduced by the government in the year 2013. So, for the first few years, our primary focus was only affordable housing. We started taking up projects in the mid-income category in the year 2017, but post 2020, a lot of focus has been towards mid-income housing. Lately, in 2023, almost close to above 80% of the homes were sold in the mid-income category itself. Right. Or if I say in terms of basically the operating margins, obviously mid-income housing would be providing better operating margins. Yes, that's correct, Piyush. So both the businesses are profitable. At project level, we earned more than 400 odd crores. So if our adjusted gross profit for FY23 was upwards of 400 crores, and in the mid-income category, we earned almost 30 odd % gross profit margin, whereas in the affordable category, that number for the previous year was at 24%. Right. प्रदीप जी, आपके पास वापस आते हुए क्या आप दोनों तरह के मॉडल डिप्लॉय करते हैं? जैसे एक तो मॉडल होता है जैसे पूरा लैंड लिया, उसके बाद बेसिकली देन पूरी तरह से पैसे लगाए या पैसे रेज किए एंड देन पूरा डेवलप किया. दूसरा ये होता है कि लैंड ओनर के साथ जेवी कर लिया एंड देन बेसिकली उसको बिल्ड किया. लाइक हाउ द बेसिक मॉडल कैसे ऑपरेट हो रहा है? सो बेसिकली हमारा जो प्रेफरेबल मॉडल है वो लैंड एक्विजिशन का है,
क्योंकि अगर आप देखें कि पास्ट में जो लैंड के प्राइजेस रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुए थे। बाय 2022 अगर आप देखें तो बहुत एक अच्छे रेट्स के ऊपर लैंड्स की अवेलेबिलिटी थी। सो जेडीए, इन टर्म्स ऑफ जेडीए हमारा प्रेफरेबल मॉडल उस वक्त तक नहीं था। ऑफ कोर्स, क्योंकि मार्केट सिचुएशन कई बार ऐसी होती है कि आप पर्टिकुलर किसी सेक्टर में काम कर रहे हैं और कोई जो लैंड ऑनर है उसे सेल नहीं करना चाहता, जेडीए टर्म में आना चाहता है। सो हमारे लिए प्रेफरेबल मॉडल जो है लैंड एक्विजिशन है, और ऑफ कोर्स जेडीए मॉडल है वो भी हम अडॉप्ट करते हैं, लेकिन वो हमारा सेकेंडरी मॉडल। ओके। और अभी अभी लैंड बैंक जो है वो कितना होगा, मतलब अभी कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे होंगे। इस तरीके से मैं जानना चाह रहा था कि इस साल या अगले साल अभी ऐसे कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो 50% कंप्लीशन क्रॉस कर चुके हैं? So I'll take it up, Piyush. So Sure. effectively, we've created a fairly strong pipeline of projects. We are focused, in our core market, which is Gurugram and surrounding areas, whether it is Sohna, Manesar, these are our core markets. So we have an ongoing portfolio which is of almost 17 million square foot, above 17 million square foot. And there are forthcoming projects which are in excess of 21 million square foot. Put together, you could say in terms of ongoing and forthcoming projects, the underlying land area would be in excess of 600 acres. So, we've created a strong pipeline both for ongoing and forthcoming projects. So what's the average inventory which is going to come up? I just missed the number. What's the average inventory which is going to come up over the next, like in terms of ongoing projects? So, ongoing project is 17 million square foot. So, just stepping back a little, Piyush. So, one of our basic business fundamentals is to launch a project at as early as possible as the land is acquired, because Okay, land spend tends to be illiquid till the time you don't launch a project. right. So even historically, over the last 10 years, we've not taken, on an average, we've taken about 18 months to launch any project after the land money was paid. We intend to continue with this approach, in times to come, because we want to keep churning the cash flow at a good pace so that, returns get created, for all stakeholders. So when you're saying 17 million square feet, all of this is right now unsold and eventually will get sold in different phases, or part of it is already sold? A good portion of it is already sold. These are projects which are under development and could be at various Sure. stages of development. Yes. They would have been launched effectively. So that's what's getting termed as ongoing. Anything which is not launched as of 31st March 2023 has been classified as forthcoming projects. Sure. So I won't go into the forthcoming projects, but just in terms of the ongoing work, because that is quite important when we're talking about real estate. From a perspective of your both mid-income and affordable housing, both in your current operating regions, what's the average sort of realization per square feet? Because of late, we have seen in the last 7 to 8 quarters, there has been a good price uptick, both in South, also Mumbai a bit there also. We have also seen in Kolkata. How the Delhi Gurgaon region has fared for you, Yeah. Rajaji? Yeah, so we've seen a similar trend in Gurgaon market. The prices have gone up, in the post-pandemic era. So, some projects which we launched in 2021, and if we look at those projects in those same locations, prices have gone up, the last 2 years. So we've seen a good upward movement of price over the last 2 years. And Rajaji, just one more question on this same. Is that what has been the average realization per square feet for you and your projects over the last 2 years? So see, as far as affordable housing is concerned, the price remains static. That's a government determined price. It used to be 4,200, till few months back. The government's recently enhanced the number to 5,000 odd rupees. As far as projects in the mid-income category is concerned, there is no capping of price. At this point in time in Gurgaon, we are selling these projects at about anywhere between 8,000 to 9,000 odd rupees in terms of capital values. Okay, sounds good. And just one number, out of 17 million square feet,
what should we estimate? Like 50% is already sold. Like what would be that approx percentage? It's more than that. Number is already sold. ओके ओके फाइन. प्रदीप जी आपके पास वापस आते हुए कंपनी के विजन के हिसाब से एनसीआर गुड़गांव क्या इस रीजन को कंपनी ने सालों से इसी में काम किया है बिकॉज आपका वहां पे स्ट्रेंथ है लैंड होल्डिंग्स है या फिर कंपनी आगे भी सोच रही है दूसरे ज्योग्राफीज में जाने के लिए. सो आशीष जी देखिए क्या है कि आप दिल्ली एनसीआर की पर्टिकुलर इस जो गुरुग्राम या सराउंडिंग द गुरुग्राम है उसकी एक जो थ्रस्ट है उसको समझिए. आज की डेट में सिचुएशन क्या है कि जो गुरुग्राम है उसका पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ जॉब बहुत ज्यादा है. कि आप देखिए आईटी का हब है, ऑटोमोबाइल हब है, बेस्ट हेल्थ केयर है, बेस्ट आईबी स्कूल्स हैं. सो मुझे लगता है वो पूरी एक ऐसी सिटी है आज की डेट में जो वर्ल्ड क्लास सिटीज के अंदर जिसका नाम है. सो ऐसे में ज्यादा जॉब जनरेशन होने की वजह से जो घरों की डिमांड है वो हमेशा बनी रहती है. पिछले कुछ आफ्टर कोविड एक ट्रेंड हमने और देखा है माइग्रेशन होने का दिल्ली टू गुरुग्राम बिकॉज ऑफ बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. काफी ज्यादा माइग्रेशन दिल्ली से गुरुग्राम की तरफ हुआ है, उससे भी डिमांड और ज्यादा इंक्रीज हुई है. सो एक ये बहुत बड़ा बेसिक रीजन रहा कि हम इस एरिया पर फोकस किए हुए हैं. और दूसरा अगर आप एक डेवलपर के एंगल से भी देखें तो आप देखिए जो ब्रांडेड डेवलपर्स की बात है, अगर मिड इनकम अफोर्डेबल की बात करें तो बहुत कोई डेवलपर्स आपको वहां पर नजर नहीं आएंगे. तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम है वहां पे ब्रांडेड डेवलपर्स का अगर आप मिड इनकम और अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें. तो वहां कहीं ना कहीं हमें अपॉर्चुनिटी मिली है. और इवन दो हम अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग बना रहे हैं लेकिन वो हमारे लिए जो घर हैं वो हम बिल्कुल क्लास यानी क्वालिटी वर्किंग वहां पर दे रहे हैं. यानी हमने उस घर को इस तरीके से डिजाइन किया है और इस तरीके से क्वालिटी उसके अंदर डाली है कि वन ऑफ द बेस्ट जोन जैसे लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट होते हैं उस तरीके से हमने उन्हें डिजाइन किया है. सो मुझे लगता है कि हम उन होम बायर्स के लिए या जो भी लोग उसमें घर खरीद रहे हैं उन लोगों के लिए हम एक ऐसे ब्रांड हैं जो उनकी एस्पिरेशन के ऊपर हम खड़े होते हैं. Sure, sir. Sure. Rajatji, coming back to you, from the perspective of, we just talked about the focus on the region. We also talked about the projects under development. We also talked about the realization and the margins. Help us also understand uh, how much funds you're raising from this IPO. What was the purpose of bringing out this IPO? Was it largely a sort of making the company as a listed company? So fundraising amount, fund usage, help us understand that. Sure. So, see, we have two institutional equity investors who, holding current stake in the company. One is International Finance Corporation, and second is HDFC Capital. So, our total issue size is as of now at 730 odd crores, in which it's primarily a primary issuance of 603 crores, and there's an offer for sale of 127 crores. Uh, Under the offer for sale category, the participation is only from IFC, wherein they're selling only part of their shareholding. As far as the primary offering is concerned of 603 crores, a major portion of that is going towards debt reduction, and the balance will be utilized towards blind pool land acquisition or general corporate purposes. What's the total net debt at the end of FY23, Rajatji? It was below 1100 odd crores, and more than 400 odd crores of debt reduction will happen as part of this IPO process. What was the average cost of debt for you? That number will be between 12 and 13%. Okay, that was a high cost debt then. Okay. So basically, if 400 crores goes out of the balance sheet, we normally actually are talking about almost a 48 to 50 CR of interest getting freed up. And that basically, so eventually there is no need of any fresh debt raising. See, real estate business is such that it's a capital hungry business. Most of our debt as of today is project based. It's Right. no corporate debt is there. It's all project based debt. We are conscious of overall debt levels in the company.
Also, Piyush, what has happened in the past is that as we've been raising money, we've also been repaying a lot of our debt. So, that is more of a regular process of raising capital and keep repaying, your existing leverage. Okay. I was also going through the net worth numbers of couple of subsidiaries and the holding company. Could you just give us color of how that recognition happens? Because a couple of them were having negative net worth. Like, just help us understand. It will just give more clarity to our viewers. Sure. So, see, we are a young and a fast growing company which is in existence for about a decade itself, right? Construction as an activity, takes about 3 to 4 years or 4.5 years, just to get completed once you start the construction. We've currently adopted a completed contract method of accounting wherein the revenue gets recognized once the project is complete, the units have been handed over, bulk of the money from customers, has been received. So if I may just use the term that, during the course of development of a project, the revenue does not get recognized. If you look at the numbers in the previous year, while we did pre-sales in excess of 3,400 odd crores, uh, our revenue recognition was, only about 1,500 plus crores. So there was still a lot of gap between the two numbers. And Layman why is language, that? Why is that so? Like, when the actual revenue recognition happens? that's because revenue recognition is basis completion of a project and not basis sale of a particular project. So and does that imply when you hand over the keys to customer at that time you recognize the revenue? Absolutely. Okay. Absolutely. And that's why many of the subsidiaries, because they would be project-specific companies, they would be actually showing negative net worth because the construction is in various stages. And when the construction happens, the revenue comes in, profit comes in, and all numbers change. Will that be a right understanding? Absolutely, Piyush. So there are scenarios where we've launched projects, achieved, sales on most of those projects, construction's happening at a fast pace. But till the time the key is not handed over, it will not reflect in the profit and loss account. And hence, for a company which is so young, which has not seen multiple, construction cycles, of 3, 4, 5 years each, that number will not look very impressive, whether on the net worth or on profit after tax perspective. What I would like to bring in here is that another parameter which one should look at is the kind of cash flow cycle which is running in the company. So our cash collections from customers has increased steadily over the last 2, 3 years. Last year also we collected more than 1,900 crores from our customers, and in terms of operating surplus, prior to any land expense was upwards of 690 crores. So Okay. that gives sense on the liquidity, cash position, and the strength of the business. Yeah, this explanation actually was very important because now people actually can look at the financials from the purpose that they really have to look which projects are at which stages at present. So when the cash flow can come. So perhaps this should be, I think, very important. Pradeep ji, towards our last few questions, लिस्ट होने के बाद आप आपका अपना लिस्टिंग को आप किस तरीके से देखते हैं? कंपनी के लिए कैसा माइलस्टोन होगा? सो देखिए, किसी भी कंपनी के लिए ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हो सकता है, लेकिन हमारी एस्पिरेशन है कि आप जो जिस मिशन पर लगे हैं कि हर परिवार को एक घर देने का जो मिशन हम एज ए कंपनी लिया है, मुझे लगता है हम उस दिशा में काम करेंगे। कंपनी का लिस्ट होना ऑफ कोर्स हमारे लिए एक माइलस्टोन है, लेकिन ये ऑफ कोर्स जर्नी बहुत बड़ी है, क्योंकि इस मेरा मतलब पूरे देश में बहुत सारे लोगों को घरों की ज़रूरत है, और हम तो केवल दिल्ली एनसीआर के एक पार्ट में ही इस काम को कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे और भी डेवलपर्स के लिए बहुत बड़ा स्कोप यहाँ पर है, और आई थिंक मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जो कंपनी है वो अपने इस काम को इसी तरीके से करती रहे। आई थिंक मैं एक बात आई थिंक जो आपने बताई भी थी, और आई थिंक व्यूअर्स के लिए जानना भी आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आई थिंक हमारे शोज पे जो रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स आए थे आई थिंक कुछ महीने पहले, उन्होंने तब दिल्ली और एनसीआर को आइडेंटिफाई किया था कि दिल्ली और एनसीआर का जो एक स्लो डाउन का पीरियड चल रहा था वो खत्म हो गया है, और परहैप्स पूरे कंट्री में जो सबसे बड़े पॉकेट में से एक है, वो आने वाले टाइम में दिल्ली एनसीआर एक बहुत बड़ा ग्रोथ का फेज वापस आ रहा है। तो आई थिंक जैसे आप बोल रहे थे उस पर्सपेक्टिव से आई थिंक परहैप्स ये एक काफी एक अच्छा फेज होगा।
आखिरी क्वेश्चन प्रदीप जी, हमने अभी जैसे अभी बात करी सारे फाइनेंशियल्स के बारे में, क्या अफोर्डेबल मिड इनकम यही फोकस रहेगा कि आगे जाके आप और अपर मिड इनकम में भी एंटर करने की सोच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैंने कहा कि हम लगभग 9-10 साल हो गए हैं कंपनी को स्टार्ट करे हुए, हम बहुत फोकस्ड हैं। हम एक बिल्कुल रीजन फोकस्ड हैं कि किस टेरिटरी में काम करना है, हम प्रोडक्ट फोकस्ड हैं और बहुत स्पेशली जो अप्रोच है कंपनी वो कंज्यूमर सेंट्रिक है कि जिस तरीके से एक मिडिल क्लास फैमिली को जैसा घर चाहिए और जिस प्राइस पॉइंट पे चाहिए उस थ्रस्ट को पूरा करने में लगे हुए हैं। ऑफ कोर्स लग्जरी हाउसिंग कभी भी वहाँ उस एरिया का एक बहुत बड़ी चीज़ रही है, लेकिन हमारा जो फोकस है वो अफोर्डेबल हाउसिंग पर है और मिड इनकम हाउसिंग पर है और आने वाले अगले 5 साल भी जो फोकस है इसी पर बना रहेगा। बहुत बढ़िया सर। हर सक्सेसफुल कंपनी जिसका स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग रहा है उसके पीछे कारण यही रहा है, फोकस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड देन रिटर्न्स। सो परहैप्स हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस आईपीओ के लिए और इस सक्सेसफुल आईपीओ के लिए। रजत जी, ऑल द थैंक्स टू यू फॉर ऑल द clarifications and information about the company. From our viewers, from our side, all the best wishes to both of you. Thank you very much. And with that, we come to the end of this conversation. Dear viewers, hope you enjoyed it. For now, it's a wrap. Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from Nirmal Bang.